just see Mahan Swami and the radiance in that eyes, and I can think that you can see God in those eyes. A deeply spiritual, deeply peaceful man, and his eyes are very penetrating, I thought. The same aura that I felt with Bapa, with Prabhu Swami, I feel the same aura. That aura, when you are in that aura, any of your problems, tensions, stresses just dissolves. तो मैं पूरा साष्टांग वहाँ पे दंडवत किया। मुझे महसूस हुआ कि मैं एक ऐसी पुण्यात्मा, एक ऐसी महात्मा को नमन कर रहा हूँ कि प्रभु की कृपा मेरे साथ है, ऐसे मुझे महसूस हो रहा था। ये मैं सच दिल से बोल रहा हूँ। He is not a normal person. He has some virtues, he has some qualities imbibed in him. Some supernatural powers are there in him which you and me or some common people don't have. That he attracts people, the way he moves, the way he conducts himself, that people are attracted towards him. You look at his face and nobility comes from that face. Sometimes you just see that person and you surrender everything because you see divine presence there. He doesn't say a word, but his face and his impression is so powerful, so divine that you surrender your whole life to him. દિવ્યતા સહજતાથી પ્રાગટ્યમાં આવતી હોય છે અને મહંત સ્વામી એ દિવ્યતા પ્રાગટ્ય રૂપમાં અમે અનુભવ્યા છે. पूज्य महंत स्वामी जी महाराज तो एक तरह से उन्होंने धर्म को पूरा जी लिया, सनातन को, अध्यात्म को, साधना को, समाधि को जी लिया। ऐसे पूर्ण तृप्त महापुरुष हैं पूज्य महंत स्वामी जी। हमारी उस ऋषि परंपरा, संन्यास परंपरा के एक बहुत उच्च शिखर है। हिमालय जैसा उनका व्यक्तित्व है। एक छोटे से पिंड में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ। महंत स्वामी महाराज ने જ્યારે હું જોઉં ત્યારે મને એમ લાગે કે ભગવાન મહાવીરે ધર્મ ક્યાં ટકે અને સાચો ધર્માત્મા કેવો હોય એનું આ ભગવાન મહાવીરે એક કલ્પના ચિત્ર આપ્યું હતું। એનું સાક્ષાત સ્વરૂપ આ બંને મહાપુરુષોમાં જોવા મળે છે। पूज्य महंत स्वामी महाराज तो अपनी केवल करुणामयी दृष्टि से ही, प्रेममयी दृष्टि से ही और अपने पावन स्पर्श से ही हम लोगों को इतनी ऊर्जा भर देते हैं जिस कारण हम लोग अपने कार्य को करते हुए थकते नहीं, प्रसन्नता से इस कार्य को आगे करते रहते हैं। यह सब उनके दृष्टिक्षेप का, उनकी करुणा का और उनके पीछे जो पूरे संप्रदाय की तपस्या खड़ी है उस तपस्या का प्रभाव है, ऐसा मुझे अनुभव होता है। देखिए, मुझे उनके पूरे व्यक्तित्व से प्रेम, करुणा, मानवता, शांति रेडिएट होती हुई, निकलती हुई नजर आई। A man who can lead so many from all walks of life, and they leave their profession alone, their status, and they are willing to follow. That tells me that he's one man who knows God and has God in the center. Because without God, it is impossible to attract anybody. Thousands of people in the room, but he actually had an aura about him as though he was talking to you or me as an individual, and the message, quite universal. Again, that's that word inclusion. It is true, I have operated many people, and this is a total different experience I have. But I felt that no, this man is something different, and he is a real saint in the true word of the saint. He has knocked me out of the world. આટલા સરસ, આટલા નિર્મળ, આટલા સુંદર વ્યક્તિત્વવાળાના મને દર્શન થયા એટલે હું તો મારી આજે વાઈફ પણ આવ્યા હતા, મેં એમને કહ્યું કે જો આપણે કોઈ કેમ તમે ભગવાનને જોયા છે? તો મેં કહેવાનું કે હા મેં જોયા છે, જો આજે મેં ગાડીમાં આવ્યા, ઉતર્યા, મેં એમના દર્શન કર્યા, એટલે એટલું શબ્દો નથી। मुझे तो वो साक्षात मूर्तिमंत प्रेम मूर्ति दिखाई दी है कि उनके रोम रोम से प्रेम झलक रहा है। उनके सामने तो मैं समझता हूँ कि ब्रह्मांड का कण कण भी नतमस्तक होना चाहिए। वो इतने सहज, इतने सरल, अद्भुत है। ભગવાન તુલ્ય સંતને જ્યારે મળતા હોય
બસ એનો સ્પર્શ જ આપણા જીવનની અંદર પુલકિત કરતો હોય છે, જેમ આજે હું પણ એ સ્પર્શને એ અનુભવ માણી રહ્યો છું. Swami is someone who was an epitome of compassion and love. There was so much of compassion in his eyes. Hence I used the term avatar of God when I saw him. Well, I should have said I'm seeing God himself. महंत स्वामी महाराज के जो दर्शन हुए आज, चेतना को छूने का जो उनकी जो क्षमता है वो जबरदस्त है. ये तभी हो सकता है जब वो एक रियलाइज्ड सोल हो. संसार के सामने तो आप एक इंसान बन के ही बिहेव करते हो, आप एक हमेशा कुछ ओढ़ के चलते हो कि मैं ऐसा नहीं, मैं ऐसा हूँ, कुछ बनावटीपन रहता है. लेकिन जब मैं महंत स्वामी महाराज जी के सामने आया तो मुझे वो लगा कि वो नकाब उतर गया, और जैसे कोई बच्चे को देख लेता है, उन्होंने शायद मुझे देख लिया और मुझे छू भी लिया, जिसके कारण ही मुझे ये अनुभव हुआ. मेरा मन बिल्कुल शांत हो गया, मेरे दिमाग पे कोई विचार ही नहीं उठा. मुझे जोर देना पड़ रहा था उस समय कि मैं क्या सोचूं, तो कुछ भी नहीं उठ रहा था. और फिर रोना, मेरे आंखों में आंसू आने लगे. तो अल्टीमेट अनुभव रहा मेरी जिंदगी का ये. Man Swami, there's a divine presence, that peace in him, and around him. When you come near him, you get charged up. When you have the darshan, you get your answers, because the darshan itself fulfills and you feel completely fulfilled. Who is Mahant Swami ji? Mahant Swami is Pragar Brahma. Mahant Swami is not a human being. Don't make a mistake. वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हैं, बस मैं तो ऐसा ही हूँ. एंड दैट ही इज डिस्टिल्ड ब्रह्मा, एक्चुअली डिस्टिल्ड ब्रह्मा, प्योर ब्रह्मा. આ તો महंत स्वामी તો કંઈ બોલતા પણ નહોતા, એ ખાલી જોઈ જ રહ્યા હતા. એ જોઈ રહ્યા હતા, એમાં એટલા બધા જવાબો મળી ગયા. મોક્ષ સુધી કોણ પહોંચાડે ને તમે, મને એનો જવાબ એમની આંખોમાંથી મળી ગયો. આ તો ભગવાન જ ને મળ્યો એટલો આનંદ થયો મને. ખૂબ ધન્ય થઈ ગયો. Meet a saint like this, all the janam ka paap jo hai, jo bhi hai, which was bothering you, which are becoming obstacles for you, for your spiritual path, एक ही दृष्टि से मेरा मन में जितना तो क्लाउड जैसे था वो पूरा आपने हटा दिया. साक्षात परब्रह्म स्वरूप है ये. आप जो देख रहे हैं वो आप फूल मत हो जाओ, ये भगवान ही है. पूजा के बाद जब मैं महंत स्वामी जी से मैं मिला, वो जो एनर्जी वहाँ की, जो आप जब उस माहौल में खड़े रहते हो ना, तब पता चलती है. अभी मैं जितना बोलूँ उतना कम है. जो मैं फील कर रहा था, वो फील हुआ कि आप एक सच में भगवान के सामने खड़े हो. ओ हमारा महंत स्वामी आया, मैं बारी जाऊं रे. ओ हमारा महंत स्वामी पधारा, मैं बारी जाऊं रे. Divine. The Tej. It's an aura. तेज હતું, उसका कोई मैच नहीं. It's a very different experience. પવિત્રતાની મૂર્તિ, એમના વાઇબ્રેશન જ અલગ છે. एक अलौकिक शक्ति का अनुभव. He is a real soul. भारत की आत्मा है. There's a purity of soul which you can only experience. I don't think you see it anywhere else. પવિત્રતાની મૂર્તિ છે, પવિત્રતાની મૂર્તિ. So they are fully with God. We were in the presence of an enlightened being, you know, we could feel that for sure. भगवान के दर्शन करने के बराबर अनुभव होता है. His divinity personified. That he is the incarnation of divinity.